गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मो सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखु बीएससी सेकेंड सेमिस्टर रो कोर पेपर थर्ड रो यूनिट थर्ड जोटा आम मोलुस्कार विषय ऑलरेडी आम जनरल कैरेक्टरिस्टिक एवं क्लासिफिकेशन विषय पढ़ा सरी आमर। तो आज आम देखा टॉर्सन एंड डिटॉर्शन इन गैस्ट्रोपोडा जोटा कि बहुत वाइटल क्वेश्चन। एथरू बहुत इंपोर्टेंट तुमर एटा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप रो भी आसीबो। एथरू कौन कौन शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे ताकू मध्य मु तुमको मझे मझे कहबी। तो आशा रखुची तुमको वीडियो पसंद आसीबो। वीडियो पसंद थिले लाइक और शेयर करिवो एवं सब्सक्राइब करिवो। एवं जो माने भी मो चैनल रे नुआ अछो मु बीएससी सेकेंड सेमिस्टर रो कोर पेपर थर्ड आ कोर पेपर 4 चार्टा को लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे देई देबी। तुम जे कि प्रीवियस क्लास गुडा को देखि पारो। तो देखो टॉर्सन कौन और डिटॉर्शन कौन आम ता विषय जानिबा। तो देखो मोलुस्का आर बायलैटरली सिमेट्रिकल आम जो प्रीवियस जनरल कैरेक्टरिस्टिक रे पढ़ीचु एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोडा आम गैस्ट्रोपोडा पाखे बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल केबे भी जानी नथुलो जोटा तुम क्लासिफिकेशन रे पढ़ीथिबो हला। इन गैस्ट्रोपोडा सिमेट्री इज लॉस्ट एंड asymmetrical character is produced by the change in the original position of the organ। अर्थात कहीं ना एमान को भितर गोटे कौन मन कर यहाँ हूँ ऑर्गान। तो जब आम मझे तक दुई भाग एमती करदे ताले दुईटा भाग सामान हम। किंतु गैस्ट्रोपोडा मान क्षेत्र कौन होता है एमान को जो ऑर्गान भितर कौन होता है ट्विस्ट हो जाए अर्थात मैंने एमती कॉइल टाइप रही जाती जहाँद्वारा कौन हुए एमान का बॉडीटा सिमेट्रिकल एमती गला सिमेट्रिकल रही कि सिमेट्रिकल हेनी। तेणु से आसिमेट्रिकल कैरेक्टर सब देखा जाए कहीं ड्यू टू तांकर ऑर्गान रो पोजीशन जो चेंज जाए से है। इन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल मोल्यूस्क देयर इज नो फ्री स्विमिंग तांकर फ्री स्विमिंग लार्वाल स्टेज देखा जाए नहीं है। फ्री स्विमिंग लार्वाल स्टेज माने कौन से माने गोटे जगार निजको कौन कहती आटाच करके रखती एवं से पाखे फ्री स्विमिंग लार्वाल स्टेज देखा जाए नहीं। बोथ ट्रोकोपर किंबा भेलिगर स्टेज जोटा आम लार्वा स्टेज जानीचु are passed inside the egg and teeny snail hatch out of the egg. As larva developed cell, its visceral mass start twisting in anti-clockwise direction and rearrange in the visceral organ so that they are accommodated inside the coil of the cell and open the organ are shifted to the anterior side where the cell is ओपनिंग लाइज है। ताने कौन जे एमान कौन एमान को टोटाली फ्री स्विमिंग लार्वा नांती एमान को भितर जहाँ भी तांकर भितर लार्वाटा अच्छे पूरा फुली डेभलप हुए कौन तांकर एग भितर है। तो लार्वा स्टेज जो एग भितर डेभलप हम मनकर यहाँ हूँ गोटे एग ता भितर लार्वाटा डेभलप है या भितर लार्वाटा अच्छे से डेभलप है। तो ये तो फ्री स्विमिंग नुहे ना ता भितर रहा ताले ये कौन हम धीरे धीरे जो से तार ग्रोथ हम ये भितर जो ऑर्गान गुड़ाक डेभलप ये कौन हम धीरे धीरे ता भितर स्पेस नथिबारु ये कौन निजे निजे धीरे धीरे ट्विस्ट करने को आरंभ कर मनकर यहाँ हूँ ऑर्गान ता भीतर से ऑटोमेटिक ता बॉडी को कौन करती ट्विस्ट करने को आरंभ कर। तो से एमान भीतर कौन तो ट्विस्ट हो जाए बा मुड़ी जाती एम सब। तो जेहेतु मुड़ी जी आम देख गोटे छोट जगह रही जमी आम मुड़ी माड़िकी रही जाऊ है। तो एम मुड़ी माड़िकी रही है। तो एम आंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुड़ी ही जहाँद्वारा कि एम कौन हुए जो तांकर जो जेते भी ऑर्गान गुड़ाक अच्छे सबूतक एंटीरियर साइड को पड़े कहीं पोस्टीरियर साइडटा मुड़ी माने एंटीरियर साइड को पड़े जोटा कि मो प्रीवियस क्लास रे तुमको कही है। The twisting of the visceral mass during development from the posterior position through the 180 degree anti-clockwise direction से माने मुड़ी ही जाती to anterior position is known as torsion। ताले तुमको ताले पचारे जदि torsion रो अर्थ कौन torsion रो अर्थ है गैस्ट्रोपोड रो जेतेबेले तार visceral mass टा कौन जाए डेवलपमेंट स्टेज रे से कौन होता है पाखापाखि 180 डिग्री आंटी क्लॉकवाइज से कौन करे ट्विस्ट करी जाए जहाँद्वारा कि फ्रॉम पोस्टीरियर रु एटा एंटीरियर पोजीशन को चली जाए तार जो पार्ट गुड़ाक मनकर यहाँ हूँ एमती अच्छी। तो एठी तार जहाँ भी पार्ट अच्छे हूँ पोस्टीरियर पार्ट एटा हूँ कौन एटा हूँ एंटीरियर पार्ट। तो यही एंटीरियर पार्ट
आउ पोस्टीरियर पार्ट मझी यहाँ कौन अच्छी जो आंटी क्लॉकवाइज जो डिरेक्शन पूरा 180 डिग्री जो मुड़ी जाए तो यही पोजिशनटा एट को पड़ जाए तो ये आंटीरियर पार्ट अच्छी ये पोस्टीरियर पार्ट एंटीरियर पार्ट को पलि आसला है तो ये प्रकार एम भितर होता है तो यू टॉर्सन बोली कहुए तो एबे देख टॉर्सन प्रकृत मीनिंग कौन बुझिल टोटाल लॉन्ग क्वेश्चन एटा ही तुम बहुत इंपोर्टेंट थिला प्रथम बुझीबाटा है तो यहाँ थिला तुम तो आम तार डेफिनेशन एबे टिके जानिबा टॉर्सन माने कौन ट्विस्टिंग इज ए 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और ट्विस्टिंग और ए visceral mass cell mental cavity with respect to head foot during larval development larval development रे ही से develop माने twist ही जाए the phenomenon takes place in the free swimming veligal larva of gastropod and convert the symmetrical larva into asymmetrical adult है symmetrical larva रो से जन्म को लार्भा स्टेज सिमेट्रिकल थी किंतु एडल्ट बेल को आसला से आसिमेट्रिकल हो सारी है कंडीशन बिफोर टॉर्सन तो बिफोर तार कौ प्रकार टॉर्सन बा ट्विस्ट होगा पूर्व केमी थी देख मेंटल कैविटी एंड इट्स ऑर्गन जहाँ भी अच्छी 2 गिल्स 2 नेफ्रिडियोपोर 2 हाइपोब्रांचियल ग्लैंड 2 ओस्फ्राडियम 2 एंड an anus is situated posterior side अर्थात तलपटे थी है यहाँ हूँ पोस्टीरियर साइड ये थी है तो तमें देख द एलिमेंटरी कैनाल इज स्ट्रेट विथ द माउथ एट द एंटेरियर साइड तो एंटेरियर साइड रे कौन था माउथ अच्छी आउ जो तार एलिमेंटरी कैनाल अच्छी पूरा स्ट्रेट थी लंबा होना थी है एंड एनस एट द पोस्टीरियर तो एनस ये साइड थी थर्ड नंबर पॉइंट देखो द ऑरिकल आर प्लेस्ड बिहाइंड द वेंट्रिकल तो देख वेंट्रिकल ऑरिकल कौट थाए हार्ट रे थाए तो ऑरिकलटा वेंट्रिकल पछपटे थाए आ नर्वस सिस्टम इज बायलैटरली सिमेट्रिकल तो नर्वस सिस्टमटा मध्य बायलैटरली सिमेट्रिकल थाए हाउ टॉर्सन ऑकर्स देखिबा है तो फास्ट देख द एंटेरियर प्रोसेस ऑफ टॉर्सन जनरली टेक्स ओनली फ्यू 15 to 30 मिनिट है 15 ରୁ 30 मिनिट टाइम निए एक्चुअल मेकानिज्म ऑफ द टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड इज नॉट प्रॉपर्ली नोन एमती प्रॉपर्ली जना नहीं है इट इज डिफिकल्ट टू गिव ए generalized account of torsion in gastropod. The asymmetrical development of 2 retractor muscles is believed to be प्राइमेरी कॉज ऑफ टॉर्सन ताले फास्ट देख तुमको जब पचारे व्हाट इज द प्राइमेरी कॉज ऑफ टॉर्सन तो प्राइमेरी कॉज ऑफ टॉर्सन होची आसिमेट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ 2 रेट्रैक्टर मसल्स है तो एमानकर आसिमेट्रिकल डेवलपमेंट देखा जाए से जगह टॉर्सनटा आरंभ होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लार्वाल रेट्रैक्टर मसल्स एंड डिफरेंशियल ग्रोथ आर पॉसिबल रेस्पॉन्सिबल फॉर सच रोटेशन तो जेहेतु एमान लार्भा स्टेज रे एमान रेट्रैक्टर जो कंट्राक्शन मस एवं तांकर ग्रोथ धीरे धीरे ग्रोथटा है से तो एमान भितर मध्य आसिमेट्रिकल पोजिशन होगा स्टार्ट कला तो यही जगार ही रोटेशन होता है आसिमेट्री इज एनकाउंटर एट द अर्ली स्टेज ऑफ विलेगल लार्वा व्हेयर द मेजोडर्मल बैंड कौन डेवलप्ड आसिमेट्रिकली द मेजोडर्मल बैंड ऑन द राइट साइड इज लार्जर देन द लेफ्ट काउंटर पार्ट बुझीपार तो आउ देख जो मेजोडर्मल बैंड अच्छी राइट साइडटा बेसिकली कौन थाए लार्जर थाए कौन तुम लेफ्ट साइड थारू है द राइट बैंड इज कंपोज्ड ऑफ 5 मेजोडर्मल सेल which elongated to form muscle cell the muscle cell a muscle cell of the right side converge and transform into the larva retractor muscles आ जो मसल सेल अच्छे पाखापाखि 5टी मेजोडर्म सेल को लेकिन मसल सेल रहा तो यही मसल सेल जोटा अच्छी राइट साइड रे यहीटा हूँ कौन बेसिकली लार्वा रिट्रैक्टर मसल्स रे कन्वर्ट होता है तापर देख नेक्स्ट हूँ देख द मसल सेल आर absent absent on the left side किंतु लेफ्ट साइड रे मसल सेल्स न थाए as soon as the larval muscle attain the power of contraction torsion of the visceral hump कमर्स जेहेतु एम लेफ्ट साइड ना राइट साइड अच्छी तेणु धीरे धीरे एम करते कंट्राक्शन स्टार्ट हुए है व्हिच इज डिस्प्लेस
टू द लेफ्ट साइड आउ धीरे धीरे जो ये टर्सन होगा माने ट्विस्ट होगा आरंभ कला ताले से लेफ्ट साइड को धीरे धीरे डिस्प्लेस करिवो इन मेजोरिटी ऑफ द गैस्ट्रोपोडा टर्सन अकर्स इन टू स्टेज गोटे होची स्टेज 1 स्टेज 2 तो स्टेज 1 रे कौन होची देखो फर्स्ट स्टेज रे तो कंट्राक्शन ऑफ द लार्वाल रिट्रैक्टर मसल अकाउंट 90 डिग्री ऑफ द रोटेशन ऑफ द विसेरल हम्प है पाखा पाखी 90 डिग्री मसल सेल कौन होता है मुड़ी ही जाए ड्यू टू दिस रोटेशन मेंटल कैविटी है मेंटल कैविटी कौन जोटा हूँ भेंट्राली पोजिशन थाए है जोटा हूँ व्हिच इज इनिशियली सिचुएटेड भेंट्राली एंड पोस्टरियरली है भेंट्राली पोस्टरियरली माने कौन आग पट को है भेंट्राल माने कौन होचे आग पट है यहाँ हूँ आग पट को भेंट्राल बोली कह जाए पोस्टरियर हूँ तल है तो आग पट एवं तल पट को थाए जोटा कम ऑन द राइट साइड विथ द फुट प्रोजेक्शन ऑन द लेफ्ट साइड है तो देखो दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज तापर सेकेंड स्टेज कौन ला 90% ऑफ द टॉर्सन इज अफेक्टेड बाय द राइट रेट्रैक्टर मसल्स व्हिच इज क्वाइट प्रोमिनेंट इन द लार्वा while the left retractor muscles is rudimentary है आम जान राइटा हूँ तुम पाँचटा पाखापाखि मसल को लेकिन तैयारी किंतु लेफ्ट साइडटा कौन रुडिमेंटारी रेस्ट ऑफ द 10% टॉर्सन इज कॉज बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द विसेरल मास है तो ये प्रकार है तापर नेक्स्ट देखो ड्यूरिंग टॉर्सन ऑफ हेड फुट रिमेन fixed and rotation takes place in the visceral mass only behind the neck so that the visceral organ of the right side come to occupy the left side तो बेसिकली एंकर हेड फुट तो ठीक अच्छे कि मझे जो विसेराल पार्टा जेहेतु पूरा ट्विस्ट हो जाए ताले राइट साइड जहाँ भी अच्छी लेफ्ट साइड को ट्विस्ट होगी पलि आसबो विसेराल बा पेलियल ऑर्गन चेंज देयर पोजिशन बाय ट्विस्टिंग थ्रो 180 degree. Posterior mental cavity is brought to the front position. Gill and kidney move from left to the right side and in front, which help in breathing. In nervous system, the two pleurovisceral connective cross themselves into a figure of 8. One passing above the intestine and the other below it है तो elementary canal twist in the visceral mass and open by anus on the side of the head on the anterior side तो माने कौन ता माने एलिमेंटारी कैनाल भी जब ट्विस्ट है ताहले सेठू कौन ला एनसटा है तार एंटेरियर पोस्टेरियर साइड थिला सेटा एंटेरियर साइड को मूव करिगला आफ्टर टॉर्सन द फूड कैन बी विथड्रॉ आफ्टर द हेड है तापर देखो बिफोर टॉर्सन द विसेरल मास पॉइंट फॉरवर्ड and the mental cavity is posterior in position. This position is called exogastric. एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखी था है तो कौन देख बिफोर टॉर्सन अर्थात टॉर्सन हेबा पूर्वरु द विसेरल मास पॉइंट टुवर्ड्स एंड मेंटल कैविटी इन पोस्टेरियर पोजिशन एमान सब कौन जी मेंटल कैविटी पोस्टेरियर पोजिशन अच्छी दिस पोजिशन इज कॉल्ड एक्जोगैस्ट्रिक आफ्टर टॉर्सन द पोजिशन बिकम्स एंडोगैस्ट्रिक ता माने कौन इन व्हिच विसेरल मास पॉइंट बैकवर्ड है देख तार फॉरवर्ड रे पॉइंटा फॉरवर्ड थिला सेटा बैकवर्ड हो गला एंड द इंटेस्टाइन लाइज इन द होल ऑफ द सेल एंड द एनस ओपन आर एंटेरियर तापर बाकी तो सब एंटेरियर पोजिशन को चली गले तो एक्जोगैस्ट्रिक माने कौन बिफोर टॉर्सन आउ आफ्टर टॉर्सन ता कह जाए एंडोगैस्ट्रिक तो एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखी था है तापर देखो नेक्स्ट होची देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द विसेरल मास कॉज डेक्स्ट्रल अर्थात राइट हैंडेड coiling of the cell which happen in the majority of the cases है however rarely clockwise rotation of the visceral mass also takes place which cause sinistral अर्थात left handed है coil of the cell there are 5 possible way by which torsion has resulted in the gastropod तो 5टा possible way हितिबो कोन फास्ट देखो एकमाया 180 degree rotation of visceral hump is achieved by muscular contraction along है this mechanism is regarded to the original way of torsion second होची देखो the commonest way of torsion 180 degrees is achieved in two subsequent
stages has been seen in heliotic atitis and patella एमान पाखे देखा जाए है तापर नेक्स्ट देख गोटे हूँ देख द इनिशियल 90 डिग्री रोटेशन इज कज बाय द कंट्राक्शन ऑफ द लार्वाल रिट्रैक्टर मसल्स जोटा कि आम प्रिवियसली दुईटा स्टेज रे पढ़ले आ सेकेंड हूँ देख द रिमेनिंग एटा 10 डिग्री होला इज अफेक्टेड बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ है सॉरी एटा भूल कहली है तुम एटा 90 डिग्री है बाकी 90 डिग्री है टोटल 180 डिग्री ना हाँ तो टोटल 180 डिग्री टू 90 डिग्री है 90 डिग्री हूँ अफेक्टेड बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ है द फर्स्ट फेज अकर्स एट द फास्टर रेट व्हाइल द नेक्स्ट फेज इन स्लोअर है तो फर्स्ट फेज जो 90 डिग्री जो रोटेट कला से बहुत शीघ्र है कि सेकेंड स्टेज रे जो 90 डिग्री रोटेट करबो सेटा टिके स्लो हो जिवो इन सम गैस्ट्रोपोड लाइक विविपारा complete 180 degree rotation is achieved exclusively by the growth process है ना तो ये कौन होची growth process रे ही तारो 100% तारो डेवलपमेंट होता है इन अप्लेसिया जो अप्लेसिया देखिबा torsion is resulted by the differential growth and the change in the position of anus is placed at the region appropriate to the adult है ना तापर कौन कौन इफेक्ट है देखो टॉर्सन द्वारा कौन कौन इफेक्ट है ताको जानिबा है तो यहाँ मत देख गोटे सर्ट नोट्रे पढ़ी पारे राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ टॉर्सन है तो यहाँ सर्ट नोट्रे पढ़ी पारे लॉन्ग क्वेश्चन तो पूरा लिख सर्ट नोट्रे भी तुम राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ टॉर्सन भी पढ़ी पारे है जोटा कि मुझे तुम सिलेक्टिव क्वेश्चन में देख डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेंटल कैविटी है तो बेसिकली कौन है टॉर्सन चेंज द पोजिशन ऑफ द मेंटल कैविटी तो मेंटल कैविटी वाज ओरिजिनली कौन है पोस्टीरियर इन पोजिशन बट आफ्टर टॉर्सन द मेंटल कैविटी एंड द ऑर्गन आर एंटीरियर इमीडिएटली बिहाइंड एंड एबव द हेड आम जानी एंटीरियर पोस्टीरियर थिला टॉर्सन पर एंटीरियर को आसीगला तापर देखो नेक्स्ट होची चेंज इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑर्गन तो बिफोर टॉर्सन एनस एंड टिनेडिया are pointed backward आम जानी एंड ऑरिकल आर सिचुएटेड बिहाइंड द वेंट्रिकल किंतु आफ्टर टॉर्सन कौन हम एनस एंड टिनेडिया हो बिकम्स फॉरवर्ड आउ ऑरिकल बिकम्स द लाई इन फ्रंट ऑफ वेंट्रिकल है पछाड़े थी आगे पलि आसला है तो युवा टे मन रखीदेव कौ जगार कौन अच्छे पॉइंट जोटा मुझे पॉइंट देती से पॉइंट को टे फोकस कर ताहले आसीज जो मुझे अंडरलाइन कर देती देखो ट्विस्टिंग ऑफ एलिमेंटरी कैनाल व्हिच वाज प्राइमरीली स्ट्रेट है स्ट्रेट थिला फ्रॉम द माउथ टू द एनस है इज ट्विस्टेड इन फॉर्म ऑफ लूप so that the anus come to the lie in front of and near the mouth है माउथ पाखो पड़े आसला बा एंटीरियरली पड़े आसला तापर 4 नंबर कौन अच्छी देखो 4 नंबर देती ट्विस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम तो प्रायर टॉर्सन द नर्वस सिस्टम इज बायलैटरली सिमेट्रिकल बट आफ्टर टॉर्सन इट बिकम्स आसिमेट्रिकल है तो यहाँ मतलब तुम जान लो तापर देखो एंडोगैस्ट्रिक कोइल तो एंडोगास्ट्रिक कोइल माने कौन तो एबे टिके पूर्व मु कहिली एक्जोगास्ट्रिक थिबो सेटा एंडोगास्ट्रिक हे जिवो केमती द कॉइल ऑफ विसरल मास व्हिच वाज प्राइमरीली डोर्सल एंड पॉइंट फॉरवर्ड और एक्जोगास्ट्रिक बिकम्स वेंट्रल एंड पॉइंट बैकवर्ड और एंडोगास्ट्रिक आफ्टर टॉर्सन है तापर लॉस ऑफ सिमेट्री अर्थात सिमेट्री जगह आसिमेट्री हो जिवो displacement of the anus towards right side of the mental cavity and lost or reduction of the pair part of the primarily left alter symmetry the organ significantly right becomes topographically left and vice versa है तामने कौन ला से asymmetry रो symmetry रो asymmetry गला तो यार किसी सिग्निफिकेंस अच्छी कि ता विषय आम देखा तो यहाँ पढ़ी पारे सर्ट नोट्रे राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉर्सन है तो देखो ये आम के सिग्निफिकेंस फास्ट देख कौन जाना देख फास्ट हूँ गार्स्टांग व्यूज रे देखा है तो गार्स्टांग 1928 एडवोकेटेड दैट टॉर्सन इज ए अडाप्टिव फीचर टू द लार्वा है विलेगर लार्वा for
प्रोटेक्शन एगेंस्ट एनिमी बट लिटिल यूज टू द एडल्ट है। तो लार्भा स्टेज रे एनिमी मान ठारू प्रोटेक्शन देवाई यहाँ बहुत बढ़िया, किंतु एडल्ट तार सेमिति किसी भूमिका नहीं है। ही ओपन है तांकर ओपिनियन कौन थिला दैट बिफोर टॉर्सन द अनट्विस्टेड लार्भा स्विमिंग द सी वाज सब्जेक्ट टू एन इजी प्रे to its predator because the mental cavity was at the posterior position है, and there is no place into which delicate head and velum can be withdrawn at the time of danger, so it is disadvantageous to the larval life है। तो but after torsion the mental cavity is brought around the anterior end of the larva which provide the space for head and velum. At danger the larva is able to withdraw its head and velum into the mental cavity। तो से कहले कौन तो जो बिफोर टॉर्सन कौन ला जिते जदि फ्री स्विमिंग बाहर जब बुलूथबो हठात कौन से शत्रु आसला ताको जदि किए आक्रमण कला ताली ये निज मुंड को हो बा भेलम हेड और भेलम को से बॉडी भीतर को धसईकिना कौन जाए जल्दी कईछ को तुम छुईदे कौन कईछ तार मुंड हाथ सब भीतर को पसई दे कि नहीं, तो ये पसई पारे ना कहीं तार स्पेस न थाए भितर, किंतु ट्विस्ट होगा द्वारा कौन जाए ता भितर मच मोर स्पेस रही जाए जहाँद्वारा कि शत्रु आक्रमण कले ये कौन जाए निजर हेड बा तार भेलम को विड्र कर भीतर को पसई दिए जहाँद्वारा कि ये शत्रु बंची जाए है। तो दिस व्यू इज वाइडली सपोर्टेड बाय बार्नर जोटा 1980 तापर रॉपर्ट एंड बार्नर 1994 एवं जोटा हूँ एंडरसन जोटा 1998 है। बट द थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द सेवराल रीजन है। तो किंतु अलग मान द्वारा मतलब क्रिटिसाइज होता। तो ऑब्जेक्शन कौन कौन होता ता विषय में सी है कौन ऑब्जेक्शन देर आर मेनी पेलाजिक लार्भा व्हिच आर नॉट ट्विस्टेड बट स्टिल सर्वाइव। जदि एमती ही थिला जे ट्विस्ट हो गले से बंची जाऊला तो बहुत गुड़ा लार्भा बिना ट्विस्टेड बंचुले है। तो नेक्स्ट हूँ द सिलिया ऑफ सम गैस्ट्रोपोड आर अंडर नर्वस कंट्रोल है एंड दीज कुड बी स्टॉप विथड्रॉइंग देम into the mental cavity, so it is not clear how cessation of movement could increase the chance of escape है। in heliotics the cell rotated in two phases है, first through 90 degree and secondly through 180 degrees, but the animal is only pelagic at the first stage at which the head is unable to retract into the mental cavity. The larva does not complete its torsion 180 degrees till it has settled in the bottom है। तो ये प्रकार विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्शन थिला। तापर सी एम यंग्स व्यू 1947 से कौन कहला हमें ता विषय टिके जानिबा है ना। तो से कहले देखो primitive gastropods were not twisted and gills were attached posteriorly inside the mental cavity. The cilia and the gills draw the respiratory current from the behind the mantle, which is opposite direction of the current produced by the locomotion of the animal, thus producing disadvantage in the respiration and locomotion है। तो से कहले जे प्रिमिटिव जो गैस्ट्रोपोड मानकर पाखरे जोटा ट्विस्टेड हेउ नथिला एंड गिल्स आर अटैच कौन पोस्टोरियरली अटैच होता मेंटल कैविटी सहित। द सिलिया एंड द गिल्स ड्रॉ द रेस्पिरेटरी करेंट फ्रॉम बिहाइंड द मेंटल है। तो बिहाइंड मेंटल पछपट से कौन करते रेस्पिरेटरी करेंट को से एक्सेप्ट करते व्हिच इज इन ओपोजिशन डायरेक्शन टू द करेंट प्रोड्यूस्ड बाय द लोकोमोशन ऑफ द एनिमल्स। तो से रेस्पिरेशन किंबा लोकोमोशन हेल्प हो नथिला। इफ द एनिमल वन ट्विस्ट ऑल द करेंट कुड फॉलो इन द सेम डायरेक्शन। जेहेतु ट्विस्ट होगा मैंने कौन जितकी भी करेंट थी वो सेम डायरेक्शन को फॉलो कला गला। दस एट द फ्लशिंग द मेंटल कैविटी विथ फ्रेश वाटर
and thus torsion becomes advantage for the ventilation of the mental cavity जेहेतु गोटे पोजिशन को सबूतक पलि आसला ट्विस्ट कला परे ताले ये कौन है जितकी भी वाटर करेन्ट थी से गोटे डायरेक्शन को आराम से जीवा आसवा कला है तो यहाँ गला तापर देखा आम नेक्स्ट जो मॉर्टन्स व्यू है तो मॉर्टन्स 1958 रे emphasize the importance of the anterior location of the mental cavity both in larval and adult mollusks. The anteriorly placed mental cavity that house the head along the sense organ, respiratory structure, etc. In adult, add positive advantage to test the incoming current, incoming water, and also to come in intimate contact for gaseous exchange है in general the benefit achieved by the mollusks due to the torsion है तो एगुड़ा हूँ तार आउ किछिटा पॉइंट गुड़ाक देखीदबा है तो नेक्स्ट पॉइंट कौन देछि the ability of withdraw of the food head food complex into the anterior mental cavity due to torsion increase and efficiency in locomotion तब नेक्स्ट देछि देखो as a gastropod cell has only one opening it has to serve as entrance as well as कौन exit for all visceral organ. The mental cavity also must open on the anterior side for easy respiration. Easy respiration. तब तक visceral mass has to undergo rearrangement so that opening of the kidney, gonad, and anus should migrate to the front side, which is only open of the cell. तब देखो the small chemoreceptor osphradium also migrate to the front side so that it could chemically analysis है water current entering the mental cavity है तो तब देखो bulky vocal mass migrate to the anterior side that provide stability during locomotion है तापर डिटोर्सन कौन जानिबा है टॉर्सन जानले डिटोर्सन कौन डिटोर्सन इज रिवर्सल ऑफ टॉर्सन अर्थात डिटोर्सन कौन टॉर्सन आम जहाँ पढ़लु ता टोटाल उल्टा होचे हम डिटोर्सन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन द सेल इज लॉस्ट और मच रिड्यूस द टिनेडिया लिबरेटेड फ्रॉम देयर एनक्लोजिंग केस point posteriorly again है their anterior position been of no advantage and visceral home get completely untwisted है फॉर एग्जांपल अप्लेसिया एमान क्षेत्र में अनट्विस्ट देखा जाए है एमान ट्विस्ट हुए नहीं है डिटोर्सन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लार्वा स्टेज एंड एनिमल अगेन बिकम्स बायलैटरली सिमेट्रिकल एवं एमान कौन सिमेट्री आसिमेट्रिकल होते से पुणी थे कौन हो अनट्विस्ट होबारू से बायलैटरली सिमेट्रिकल हो नर्वस सिस्टम कौन बिकम सिमेट्रिकल एंड नॉट ट्विस्ट इन द शेप ऑफ 8 है तो देख तापर पेलियल कॉम्प्लेक्स ट्रावेल बैकवर्ड पुणी थे फ्रंट वार्ड थी बैकवर्ड को पलि तो टिनेडिया आर पॉइंटेड बैकवर्ड एंड द ऑरिकल बिहाइंड द वेंट्रिकल पुणी थे देख जहाँ जहाँ थिला पूर्वर सेटा पुणी थे चेंज हो तार नेक्स्ट पोजिशन को पलि आसो है तापर देख विसराल लूप एंड द इंटेस्टाइन बिकम स्ट्रेट हो सिमेट्रिकल जोड़ा आम कौन थी कॉइल्ड होकिना थिला आसिमेट्रिकल थिला तब देखो इन दिस वे द सेकेंडरी एक्सटर्नल सिमेट्री इज एस्टाब्लिश्ड अगेन है तब देखो एक्टेन आउ बुला डिटोर्सन इज इनकम्प्लीट सामान को इनकम्प्लीट देखा जाए इट पोजेस कंप्लीट कॉइल सेल बट एग्जिबिट ओनली 90 डिग्रीज ऑफ टॉर्सन है सो दैट विसराल लूप रिमेन पार्टली ट्विस्टेड एंड एनस टिनेडियम are directed laterally instead of anteriorly है anterior side को न जाए जेहेतु मैंने पाखापाखि केवल 90% ही एमानकर टॉर्सन होता है बाकी 90% रही जाए तेणु एमान को एनस पार्टा संपूर्ण भाव में कौन एंटेरियर पोजिशन न रहीकिना लैटराली पोजिशन में रही जाए है
कम्प्लीट डिटर्सन इज ऑब्जर्व इन द आप्लेसिया। आप्लेसिया क्षेत्र में कम्प्लीट डिटर्सन देखा जाए। एग्जांपल बहुत भल भाव मन रखी था है। तो देखिए डिटर्सन टेक्स प्लेस जोड़ा होची ओइंग टू लॉस ऑफ द सेल द गिल आर डायरेक्टेड laterally but lie posterior to the heart and in the body becomes कौन symmetrical। तापर देखिबा टेरोट्राचिया जोटा जी कोरोनाटा देखिबा जदि आमे ताले द सेल मेंटल एंड विसरल सेक आर लॉस्ट एंड हेंस एनिमल बिकम सिमेट्रिकल है। वर्म लाइक व्हिच इज लॉन्ग प्रोबोसिस फॉर द फीडिंग है। तापर न्यूडी ब्रांच रो देखिबा जदि also undergo detorsion due to the loss of cell. Doris are symmetrical, rhinopores and the anal gill are posterior side है। The sea slug तापर eolis and the lolidia are symmetrical animals because they have undergoes कौन डिटर्सन ड्यू टू द आब्सेंस ऑफ द सेल। तो आब्सेंस ऑफ द सेल बा सेल आब्सेंस रे ए माने डिटर्सन हो जाती है बा पुनर्बार पुणी थे पूर्व अवस्था को फेरी आसती है। तो यहाँ थी आम टर्सन और डिटर्सन विषय आम पढ़ले। आशा रखुची तुम बुझीपार एवं तुम नोट कर। नेक्स्ट क्लास रे गोटे नुआ चैप्टर आनिबा। थैंक यू।